to promote Ayurveda? A big round of clap for a very relevant question. What role can NSS volunteers play in promoting Ayurveda and Ayush? Thank you. Okay, thank you. I would like to know the name. His name is? Shankar. Okay, Shankar. Shankar, question to Huda Karne, thank you. Dhanyabad, Aji Bihur Dinakhon tumi ei question to Hudisa. As I belong from Assam, so I am just having a gesture with my Assamese brother. So this is a very good question he has asked, and I am happy that a youth has addressed this question. So first, what we would like to say is, to spread awareness about Ayurveda, first you have to know what is actually Ayurveda. Ayurveda is not something that has been said in the roadside tents, what we call ये disease के लिए ये तेल लगा लो, वो disease के लिए वो खा लो. Having that kind of knowledge about Ayurveda, you can't spread the awareness about it. So what I would request is, all the NSS volunteers, we have over here NSS volunteers from the Ayurveda field also. So first get to know what is the main Ayurveda essence, what are the branches, what are the specialties present in Ayurveda, and then we will let you know how you all can help us. What I'll tell is, recently I had visited an international seminar, and they had a skill building workshop on it, and it was based on community health. Since I am a PG doing my MD in Swastha Vritta, that is the counterpart of social and preventive medicine, that is the community medicine I would say, they had conducted a survey of 26 districts, and while doing that survey, it was not possible only for the Ayurveda doctors to do so. They had to take help of the local people, they had to take help from the local NGOs so that they could get a data on what is the number of patients having anemia in the child age group present in that area. So we took help from the volunteers over there, we gained the data, and after the data was gained, we trained the volunteers. This is the state of anemia, how you can counsel the patients, not only the doctors, even the volunteers, and then we made them aware that these are the kind of medicines, lifestyle modifications that has to be given to come out from that situation, and it was then carried out by the local volunteers to spread the awareness among the patients. So this is how we can get help from the NSS volunteers. NSS volunteers, I would say, कौन जानना पसंद करेगा? Any disease, what I would like to say is, any state you belong to, any region you belong to, first try to know about the situations in that condition. It might be a mental disorder, it might be a physical disorder. पहले ये जानने की कोशिश करो which of the diseases or disorders are more in number. And then let us know that this is the disease prevailing in your society. Then we will train you कि इसमें क्या जानना है, क्या आपको aware करना है public को. And then I promise you, the Ayush ministry, the whole Ayush fraternity will develop projects, research projects to work on those disorders prevailing in your society with the help of NSS volunteers. So a big round of cheers for the NSS volunteers who are going to support the whole Ayurveda fraternity in future. Right? Can I get an even more big clap? I hope this kind of cheer coming up from you when we really want to introduce the research projects in your area and you can help us. So I think, Shankar, your question has been answered, right? Okay. Yeah, just adding on to what Doctor just shared with you. So briefly telling you that Ayurveda has two main branches. So one is Swasthasya Swasthya Rakshanam, so the preventive care, wherein we help healthy people to maintain their health, and then Aturasya Vikara Prashamanam, that is treating the diseased.
So you can definitely help us in the preventive care. So the main three branches of this preventive care are Dinacharya, Ritucharya and Sadvritta. So the daily regimen, the food habits, the seasonal regimen. So this holds good for everybody and anybody, even for a small baby till the eldest in your society. So number one step would be understanding these principles under a experienced practitioner or an Ayurveda Vaidya. So learn these basic principles and then adopt them in your life, and then make a group of like-minded people who would want to help you in this mission. And you can start with schools, because children are the budding minds, and then they grasp everything. They're like sponges. Whatever we give them, they simply absorb. So you can identify schools in your communities and go and then educate them about these basic principles of health. And number two, you can contact or you can approach women communities, because if you educate a woman, it's like educating the whole family. So to begin with, if you can start your journey in educating children on one side and women on one side, then you will be helping us in spreading the authentic essence of Ayurveda, and you will be helping us in carrying forward this wellness mission. So you can start with this little step and then see how it progresses to make it as a bigger mission. I would like to add just one or two information for this. NSS जो अभी काम कर रहा है, इसको मौजूद रखिए पहले. जैसे कि पहले के कोई सेशन में आयुष के डॉक्टर्स को ऐसे बड़े मंच पे बुला के शायद किया नहीं था. इसके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉस. एंड इसको डबल अप कीजिए कि हर एस्पेक्ट पे आयुष रह सकता है. क्रीड़ा में आयुष है, क्या बोलते हैं उसको, कल्चरल्स में आयुष है, एजुकेशन में आयुष है, और हेल्थ सेक्टर में भी आयुष है. अब तो मंत्रालय में भी गया है, यानी आयुष के मंत्रालय ही हो गया है. तो वैसे NSS कैन कंट्रीब्यूट फॉर बिल्डिंग द सपोर्टर्स ऑफ आयुर्वेदा. If NSS alone itself is supporting Ayush, then that means whole nation is supporting Ayush. Thank you. हाँ मैडम पूछिए प्लीज. श्रीमान आयुर्वेद आचार्य, सर्वप्रथम आपको प्रणाम. मैं राजस्थान कॉन्टिजेंट लीडर NSS, और सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आयुर्वेद के परिणाम को शीघ्रता से किस प्रकार प्राप्त किया जाए कि आज के युवा को आयुर्वेद पर विश्वास हो जाए. हमारे समर का एक प्रैक्टिस है. हम हर समर के वक्त पे हर एक भी खाएगा शायद. वो है सिजलिंग ब्राउनी. सभी खाए हैं ना सिजलिंग ब्राउनी. इसका ही परिणाम अगर आप जान लिए तो आयुष के सब कुछ आपने जान लिया. आइसक्रीम ये अत्यंत शीत द्रव्य है, यानी बहुत कोल्ड पोटेंट ड्रग है या आहार पदार्थ है. उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हॉट पोटेंट चॉकलेट को डाल रहे हैं. इसको सिजलिंग ब्राउनी बोलते हैं, है ना. मैं जब से आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ ये सिजलिंग ब्राउनी खाना बंद किया है, इसलिए मैं भूल गया हूँ शायद सिजलिंग ब्राउनी ऐसा ही रहता है. तो ऐसे मिक्सचर को खाना पहले बंद करना है. इससे ही बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो अपने हर दिन में होते हैं उसको हम टाल सकते हैं. साइड में आते हैं, इसके बीच में पूछ लीजिए पहले टाइम में. हाँ अभी मेरा आंसर आपको मिला. धन्यवाद. यस, फेथ है इसलिए इतने लोग बैठे हैं. डॉक्टर जवाब के पहले बिफोर द आंसर एक स्मॉल अनाउंसमेंट एंड देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन सो दैट यू कैन टेक इट. कल से हम एक ही प्राइज दे रहे थे. सुबह इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू जज विच वॉज द बेस्ट क्वेश्चन. सिमिलरली वी नेवर एक्सपेक्टेड. आयुष में भी एक सिचुएशन हो गया है वेर वी हैव वेरी डिफिकल्ट इन चूजिंग द बेस्ट क्वेश्चंस. सो दो नाम आए हुए हैं. पहले मैं बोलता हूँ, प्लीज कम टू द साइड, द एक्चुअल टू गाइस. वन इज माली तुकाराम फ्रॉम महाराष्ट्र और एक शंकर असम से. आप आराम से आइए, तब तक आपके रीजनल हेड एक क्वेश्चन पूछेंगे. द अदर्स आर सम वेरी गुड क्वेश्चंस which the panelists decided. 7 we are giving some wristbands and other things.
शीर सागर अंकिता काशीनाथ फ्रॉम महाराष्ट्र, अगर है यहाँ आराम से, आफ्टर द क्वेश्चन आई जस्ट वांटेड यू टू बी देयर। सिद्धू कुमटगी बीजापुर से, कोमल महाराष्ट्र से बहुत आ रहे हैं, कोमल नगरुरकर, सूर्या फ्रॉम आंध्र प्रदेश, शिवम कुमार मिश्रा, बालराजू आंध्र प्रदेश से और नियाज कर्नाटक से। ठहरिए जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ना हो जाए, देन आफ्टर दैट वी विल अवार्ड द किड्स। प्लीज पूछिए सर। Namaste, sir. My name is Irappa Pattar. I am from Karnataka contingent. So my question is, there are some psychological related diseases. For example, schizophrenia. So where you cannot immediately give any good medicine to control that from Ayurveda. There is no allopathy will definitely immediately that control the minds of that diseased person. उसके लिए आयुर्वेद में ऐसा कौन सा इलाज है जो ऐसे साइकोलॉजिकल कंडीशंस का इलाज कर सकता है इमिडिएटली? सर ये जो मैंने पहले भी बोला था, आई हैड एड्रेस्ड दिस कि डोंट कम टू एन आयुर्वेदिक डॉक्टर विथ एन एलोपैथिक नेमिंग. Get the person with the difficulty to an Ayurveda doctor who can understand the disease in his own science. है ना? अभी मैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में बैठ के एग्री के बारे में बोलने लगा तो मुझे मालूम नहीं होगा कि आई विल बी द नेगेटिव पर्सन टू आंसर. ऑफ कोर्स आई एम जस्ट कमिंग. Grossly we can help you out with the label of schizophrenia. With the label of schizophrenia, through Ayurveda we can definitely help you out. But when we say कि Ayurvedic management of schizophrenia, it includes multiple things. Not only medicine, unlike an allopathic system. It has to be monitoring as an inpatient, it could be, or it could be taking the patient to some other scenario, like where the person is made to stay with the doctor for a couple of hours every day to discuss and drop down the difficulties. So that involves multiple specialties. Like she is here with the preventive and social medicine and yoga, and she is Panchakarma expert, and I am from a Samhita wherein no way link between clinics but still practicing. So we need to sit together and understand how the disease is originated. So if we understand the cause, then the treatment becomes easy. That is my opinion. So if you get the patient to understand why schizophrenia is seen in that particular individual, we can address in a better way. थैंक यू शंकर और हमारे महाराष्ट्र तुकाराम, प्लीज आइए. कैन वी हैव द गिफ्ट प्लीज फॉर देम, फॉर द किड्स. थैंक यू प्लीज. सर ये आपका जो क्लैपिंग सिस्टम था यही आयुर्वेद है और वो एनएसएस में दिख रहा है. वेरी गुड, वेरी नाइस टू सी. सर ओनली वन. गुड इवनिंग सर. We are also 7 relevant questions out of the 10. We want to acknowledge the kids for posing some good questions. So please. Thank you. Okay.
Excuse me, sir. Sir, I need one clarification, sir. Sir, here, only I will one. talk to you. Anything on From Tamil Nadu, only one clarification about Ayush. हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ एनएसएस तालीफ. थैंक यू. अभी मैं दीपक सिन्हा छत्तीसगढ़ से, ही इज़ एन एनएसएस अवार्डी. आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू present you a small memento on behalf of all of us. Deepak Sinha ji, Dr. Gaurav साहब को please. यति पंजाब से प्लीज डॉक्टर साधना मैडम को प्लीज वी वुड रिक्वेस्ट वेरी स्मॉल गिफ्ट. रेवती तेलंगाना से मैं रिक्वेस्ट यू रेवती टू sort of present the gift to Dr. Chinmayi. Announcement for tomorrow, yoga, चाय का है, प्लीज बिफोर यू लीव यू कैन हैव अ गुड कप ऑफ टी एनर्जाइज. बट कल सुबह योगा है, भूलना मत. आपका जो टी शर्ट्स है प्लीज लीजिए, और योगाथॉन जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए. दिस इज टू. कल शाम को यू आर हैविंग अ गुड सेशन अगेन. मॉर्निंग रिन्यूएबल एनर्जी का है, दोपहर मेंटल हेल्थ का है, फाइनली स्पोर्ट्स में है. यू हैव गॉट ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर्स, यू गॉट इंटरनेशनल मेडल विनर्स विथ यू. और फाइनली आप सबके लिए खुद एक ताली बजा के वी विल से एंड फॉर द डे. एक फाइनल ताली खुद के लिए. थैंक यू. Sir, lastly, only one. When people met an accident, suddenly met an accident, there is any contingent leaders, all of you submitted your TA claim forms. Team leaders,